Hello, morning aspirants. So the festive season is over for now, and students are pretty busy trying to catch up with the syllabus. तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है. एक रॉकेट प्रोपल्सन का कॉन्सेप्ट उसमें बचा हुआ रह गया था. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. तो रॉकेट प्रोपल्सन की जब बात करते हैं तो सबसे पहला काम होता है एक रॉकेट बना लेने का, राइट? सो दैट आवर माइंड नोज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ये हो गया हमारा रॉकेट, एज सिंपल एज दैट. ओके, नेक्स्ट इज रॉकेट प्रोपल्सन में if suppose you have been asked to find or calculate the velocity of this rocket after time t, then how we derive the expression for it. That is what is the whole sole purpose of today's session. So let's get into it. तो मैंने क्या डिज़ाइन किया है कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम ले लेते हैं. ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है. इस समय रॉकेट उड़ने वाला है. इस समय इसका मास कितना है? m0, राइट? ये टाइम है मेरा t. ये टाइम है मेरा एट टाइम t. इस समय इसका मास कितना हो गया रॉकेट का? बोलिए बच्चों. Yes, aspirants, the mass of this rocket will be how much at after time t? Definitely less than m0. Why? Because a lot of gases are getting expelled out. They are thrown out of the rocket in a downward direction. इस फैशन में गैसेज एक्सपेल आउट हो रही है, जिसकी वजह से थ्रस्ट लगता है रॉकेट पे और उसकी वजह से रॉकेट ऊपर उड़ता है. एज सिंपल एज दैट. तो ये जो गैसेज एक्सपेल आउट हो रही हैं, डोंट यू थिंक इट इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग द इनिशियल मास m0 ऑफ द रॉकेट, राइट? सो लेट ये जो रेट से जो गैसेज और जो मास ऑफ गैसेज एक्सपेल आउट हो रही है उसका रेट को हम लोग r मान लेते हैं. तो अब मास आफ्टर टाइम t कितना बचा रॉकेट का? m0 माइनस r इंटू टाइम t. ओके, r was the rate with respect to time with which the mass of the gases was getting expelled out of the rocket in the downward direction. So now after time t you are left with mass m of the rocket, and that is equal to m0 minus rt. फिर हम लोग एक छोटा सा पीरियड लेते हैं. कितना छोटा सा पीरियड? dt पीरियड लेंगे. ये हो गया टाइम t. कितना हो गया? अब t प्लस dt ले रहे हैं. क्यों ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग? सो दैट कि ये छोटा सा पीरियड में वी कैन कंजर्व आवर मोमेंटम. क्योंकि जैसे रॉकेट एक्सपेल आउट कर रहा है गैसेस को, एंड इट इज दैट प्रोसेस इज जनरेटिंग द अपवर्ड थ्रस्ट टू द रॉकेट. डोंट यू थिंक देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स mg व्हिच इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट? सो वो फोर्स की वजह से जो चेंजेस आ रहा होगा मोमेंटम में, उसको नलिफाई करने के लिए हम एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम पीरियड dt कंसीडर कर रहे हैं, ड्यूरिंग विच वी कैन अज्यूम दैट no external force is acting on the rocket, and hence the conservation of momentum principle can be applied during the period t and t plus dt. That is the whole sole purpose of analyzing this situation in this fashion. Okay, so t plus dt में मास रॉकेट का कितना बचा वो देखना होगा हमें. इसमें जो मास बचेगा वो हो जाएगा m डैश, जो होगा कितना? m माइनस, मान लीजिए छोटा सा मास निकल गया तो m माइनस डी एम हम लोग कर रहे हैं. डी टी पीरियड में छोटा सा मास ऑफ गैसेस एक्सपेल आउट हुआ. तो अब जो मास बचा रॉकेट का आफ्टर t प्लस डी टी, दैट विल बी इक्वल टू m माइनस डी एम, करेक्ट? अब हम लोग क्या करेंगे? ये दो पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. ये हो गया सिचुएशन 1 और ये हमारा हो गया सिचुएशन 2. क्योंकि ये इस पीरियड में नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है ड्यूरिंग विच देयर इज एक्चुअली नो एक्सटर्नल फोर्स. नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है यहाँ, तो वो कुछ नहीं है. तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहाँ पे. टाइम टी पे कितना मोमेंटम था जल्दी से बताइए. प्लीज टेल मी द मोमेंटम एट टाइम टी पे. मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी मान रहे हैं, रॉकेट एक्वायर कर लिया है. जब यहाँ टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे रॉकेट फ्लाई ऑफ किया,
इनिशियल लिफ्ट अपना एक्सप्रेस किया तो उस समय वेलोसिटी था v नॉट। अब आफ्टर टाइम t हम लोग मान रहे हैं इसका वेलोसिटी हो गया v। टाइम t प्लस dt के बाद वेलोसिटी क्या होगा? क्विकली टेल मी। यस माय डियर एस्पिरेंट्स, कैन यू quickly tell me what will be the velocity after time t? Definitely it will be more than v, and कितना v से बड़ा होगा उसको हम लोग एक infinitesimally small quantity v plus dv मान ले रहे हैं। I hope the situation is pretty clear to you and your minds, right? क्योंकि माइंड के पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी माइंड आगे का सिचुएशन को इमेजिन कर सकेगा करेक्टली। तो ये पोजीशन 1 पे जो हम लिख रहे हैं मोमेंटम, ये कितना हो गया? m इंटू वी। और पोजीशन 2 पे जब हम मोमेंटम लिखेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया? मास तो घट चुका है, m माइनस dm हो गया इधर। और वेलोसिटी टाइम t प्लस dt के बाद कितनी होगी ये वेलोसिटी? ये रॉकेट की v प्लस dv, राइट? Will this be the only momentum of the system after time t plus dt? No. आपका dm मास जो एक्सपेल आउट हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड dt, उसका भी मोमेंटम को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये dm मास का मोमेंटम हम लोग कैसे कंसीडर कर रहे हैं? v माइनस u कर रहे हैं। u क्या है? द वेलोसिटी विच द गैसेज आर गेटिंग एक्सपेल्ड आउट ऑफ द रॉकेट, ये u है। So this is our situation, okay? Initial momentum at position 1, that is at time t, and the final momentum at position 2, that is after time t plus dt. ये equation is what you are supposed to arrive at to deduce the expression for final velocity. अब इसको आप right side को थोड़ा clean करोगे तो you will find you are having mv plus mdv minus vdm minus dmdv plus vdm minus udm. Please have a look. I hope I haven't committed any sort of minor errors in my cleaning task. तो अब यहाँ क्या होगा? Now you are going to do a little bit of mathematics. This thing as per calculus will be almost negligible, tending towards zero, because you are kind of multiplying two infinitesimally small quantities, so definitely they will tend to, the product will tend towards zero, so you can nullify this thing. Now you're left with what? You're left with just m dv is equal to udm. I hope the equation is pretty clear to all of you. Now you can again rearrange and do a little bit of more cleaning over here. By what you can do, you can bring 1 upon m dm is equal to u is equal to, or you can say 1 over u into dv, which turns out to be nothing but u dm over m. M is nothing but my m naught minus rt. R was the rate at which the mass of gases were getting expelled out from the rocket, thereby generating the necessary thrust, upward thrust on the rocket. Okay, and now over here you are left with only dv. That's it, as simple as that. अब क्या करना है? अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। टाइम कहाँ से शुरू हुआ? 0 से। कब तक निकालना है वेलोसिटी? आफ्टर टाइम t। इधर वेलोसिटी कहाँ से शुरू हुआ? v नॉट से। टाइम t के बाद वेलोसिटी acquired by the rocket will be v. So as simple as that. Now you can integrate it and you will be getting something like u ln
m naught over m naught minus RT is equal to V minus V naught. And this expression will fetch you your expression for velocity after time t of the rocket as initial velocity plus I think you'll get an R over here also once you integrate it. Okay, so V naught plus U by R. Well, you can do a little bit of check over this integration of mine. I'm not pretty sure, but I think it's just ABCDs of calculus. You can do it yourself, but this is what I can think of right now. V naught plus U over R and ln m naught over m naught minus RT. R आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा किस रेट से गैसेस एक्सपेल आउट हो रही हैं, राइट? So this is your final expression for velocity of rocket after time t, right? So as simple as that, this will be your final expression. I hope the expression, deduction, mathematics portion, everything is pretty clear to all of you. Many thanks for joining me for today's session. If you really like the deduction and understanding part of rocket propulsion along with conservation of momentum principle, then please hit the like and subscribe button. And also, you can post your comments in case you are having any difficulty in understanding this particular concept, or if you are dealing with any particular numericals which is kind of bugging you, you can post it in the comment and I'll be more than happy to sort it out. Thank you.